Okay, we are going to get started. Somebody needs to confirm if they are able to see the shared screen. Yes, sir. Okay, great. Thank you. Okay, so we have what we have covered so far is some of the counting mechanisms we have already talked about. Counting mechanisms, in which we talked about combinations, permutations, multinomial law, and basic counting principles. And then last time we started talking about events and sample space. So what is a sample space? A sample space is when you perform an experiment. So when you perform an experiment, a random experiment, when we say that random experiment, that doesn't mean that you just go ahead and perform some experiment which is random. It's just perform an experiment whose outcomes are random. Or better way of saying this is perform an experiment with random outcomes. So you can put all of these outcomes in a sample space. Sample space is nothing but a set of all possible outcomes. All possible outcomes. And the example is that when you roll a dice, you have 6 possible outcomes. When you roll a dice and a coin together, you have 12 possible outcomes. And the set of all of those 12 possible outcomes would be the sample space for that experiment. Sample space for that experiment. Okay. I'm going to add the video here as well. Now, sample space has different outcomes here, and the set of all possible outcomes is called the sample space. We can also define events on the sample space. And what is an event? Event is nothing but a subset of the sample space. A subset of the sample space. एक ऐसा subset भी हो सकता है जो empty हो, empty set भी हो सकता है. एक ऐसा set भी हो सकता है जिसमें पूरी की पूरी sample space आ जाए. So you can have a number of events defined on a sample space. As an example, you can define an event which includes these 4 sample points. These 4 sample points. And when I say sample points, it's the same thing as outcomes. Outcomes को हम sample points भी कहते हैं. Sample points or outcomes. So similarly, another set here, this is another event. ये green में जो show किया, this is another event. And then this guy here, this is yet another event. Yet another event. Yeah. And last time we talked about mutually exclusive events. The events which cannot happen together. And don't forget that an event is simply a set. एक subset होता है sample space का. So एक event जो है एक set होगा. So 2 events or 2 sets which are mutually exclusive means that their intersection is 0. The sets which represent those events, their intersection is 0, not null set. No intersection. No intersection. So those would be mutually exclusive events. Okay. We also talked about what we call collectively exhaustive events. Collectively exhaustive events. जिनका union ले
then they exhaust the entire sample space. If you take the union of collectively exhaustive events, if you take the union of those, all of those events, then it exhausts the entire sample space. Okay. In this example here, this red event, the green event, and the yellow event, all of these, or orange, whatever you call it, so these events are collectively exhaustive. Collectively exhaustive. Their union is the sample space. Is the sample space. वो एक ऐसा सेट है जो this entire global set, which includes all the possible outcomes or all the sample points. Okay, now since events are sets and sample spaces also are set, I can define the intersection and union of events. Intersection and union of events. Okay. Intersection and union of events, we talked about this last time as well. If you have two events A and B, their union, A and B, their union tells you at least one of the events occur. One of the events occur. At least one of the events occur. So either A occurs or B occurs or both of them occur. And A intersection B would be indicative of an event that both A and B occur. And what does it mean for an event to occur? What does it mean for an event to occur? An event occurs when any of the containing outcome occurs. Okay. And what does it mean to have an outcome to occur? Whenever you perform the random experiment, in the entire sample space, exactly one outcome will come. Exactly one outcome will occur. So if you have a sample space which is rolling a dice, we know that one of the 6 possible outcomes, exactly one of those occur. ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना occur करे और ऐसा भी नहीं होगा एक से ज़्यादा occur करे. So we will have exactly one outcome occurring from the sample space. In fact, any experiment that you perform will have a sample space. Any random experiment will have a sample space. उसके sample points होंगे या outcomes होंगी. For any random experiment that you perform, from its sample space, exactly one outcome will occur. Okay. So when that outcome occurs, then all the events in which that outcome is contained occur. So for example, let me call this green event an A event, this guy B, and this guy is C. So let me ask you this question. If this outcome occurs, जिसको मैंने dark कर दिया blue में, okay. When this outcome occurs, which of the events A, B, and C are occurring? Which of the events A, B, and C are occurring? Answers in the chat window. B and C both are occurring. A is not occurring. Why? Because कि A की containing outcome में से कोई occur नहीं कर रहा. ये blue वाली outcome आई है, तो ये वाली जो outcome है, ये C के अंदर भी contained है और B के अंदर भी contained है. ठीक है? So B and C are both occurring when this outcome occurs. So now we understand what does it mean for an outcome to occur. We also understand what it means for an event to occur. ठीक है? So when an event occurs, ऐसा नहीं होगा उसके अंदर वाली सारी outcomes occur करेंगी. ना. Only one outcome will occur at a time. एक time के ऊपर एक दफा experiment perform करेंगे, only one outcome will occur. Okay, so that's great. Now, since the events are sets,
are sets, we can perform basic set operations. Basic set operations on events. हम events के ऊपर set operations कर सकते हैं. और actually we saw the example. This union is a set operation. Intersection is a set operation. ये दो examples तो हमने पहले देख लिए. इसके अलावा set theory के अंदर जितनी भी आपने develop की हुई है theory, we can apply all of those to events. We can apply all of that to events. Okay. I'm going to move this out of the way. We'll have to use this later on. Did not want to draw it. So I can perform some set operations, some examples of the set operations, and this is obviously not an exhaustive example. Set operations. कौन से set operations हम कर सकते हैं? So one possibility is that E union F is the same as F union E. E union F and F union E are the same. What is called commutative property. Commutative property. Also, E union F union G, where E, F, and G are events, is the same as E union F union G. This is associative property. This is commutative property of sets. This is associative property of sets. There is another property which is called distributive law or distributive property, which is E union F intersection G is equal to E union E intersection G union F intersection G. This is called distributive property. Is set theory mein, you can prove this by using set theory or Venn diagrams, whatever you want to use. We are not going to go into that detail. ये आपने basic classes में कहीं पे पढ़ी. So we can also talk about union of multiple events. Union of events. ये ऊपर हमने describe किया A union B when at least one of the two events occur. We can talk about union of multiple events. Union of multiple events. Union of multiple events. वो क्या होगा? That is union of multiple events E1, union E2, union E3, dot dot dot, up to union En. ये n events हैं E1 से लेके En तक, and I'm just taking the union of all of those. One way of writing this is I is equal to 1 to n EI. This is the union of all the EIs. The union event, this is also an event. When you take the union of a set of two sets or three sets or four sets, you will get another set. Okay. So if you take the union of many events, you will get another event. So this is an event. This guy is an event, and this event occurs. This event occurs when at least one of these guys occur. Okay. The union event occurs when at least one of the EIs occur. Similarly, intersection of multiple events, intersection of multiple events, this is written as intersection of I is equal to 1 to n EI, which is also written as E1 intersection E2 intersection E3 dot 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 intersection of En. Sometimes it is also written as by removing the intersection sign. Most books will also write it like this: E1, E2, E3 dot 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 up to En. बीच में से intersection का sign उड़ा देते हैं. That also means intersection. It's one and the same thing. And this is also an event. This event occurs when all of the EIs
all of the EIs occur. When all of the EIs occur. Similarly, we can talk about the complement event. Complement event. Some event E whose complement would be equal to your entire sample space minus that event E. Or sometimes we write this omega minus E. So omega या S जो है ये sample space को denote करती है. Sample space. Up to you what you use. Okay. So E complement is an event which occurs when E does not occur, and vice versa. So in a Venn diagram, we can show it like this. So you have an event E, everything outside E is E complement. Everything outside E is E complement. Okay. Then in the set theory, we also have what we call De Morgan's laws. De Morgan's laws. There are two of these, or maybe more of these, at least two of them relevant to us in the current discussion. And that is, if you have union of events, union of multiple events, EI. So this is a set. If this is a set, I can take the complement of this set. I can take the complement of this set. De Morgan's law says, without proof, which you may have seen in your early classes, it's E1 intersection E2 intersection E3 dot 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 intersection En. So the union changes to intersection. Union changes to intersection, and same thing when you have intersection of multiple events. And if you take the complement of that, this will become E1 union E2 union E3 dot 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 union En. So ये जो हमने Venn diagram यहाँ use किए, we will often use the Venn diagrams to facilitate the set operations. In the notes that we have already shared, there is an example of De Morgan's laws. So please go through that example. There are two coins that you have tossed. उस example के अंदर उसमें De Morgan's law की application दिखाई. Now I'm going to talk about what we call axioms of probability. There are many theorems in probability that we will prove, or you may have seen in an earlier class. But what are these axioms? These axioms are statements about probability, and these axioms are the ones that we use without proof to prove other probability theorems. And I'm going to move this further out of the way. Okay, so what are the axioms of probability? Very, very simple. There are three axioms. The first one is that the probability of some event E is always between 0 and 1. Makes sense? No. There is some chance of something occurring is between 0 and 100%. Axiom 2 is that the probability of sample space is 1. What that means is that one of the outcomes in the sample space will occur. ऐसा नहीं होगा कि sample space ही occur ना करे, क्योंकि sample space is the set of all possible outcomes. All possible outcomes. तो ऐसा नहीं हो सकता वो कि all के अलावा कुछ occur करे. ठीक है? And the third axiom is for mutually exclusive events. For mutually exclusive events, E1, E2, dot, 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 up to En, the probability of the union of these events, I is equal to 1 to maybe infinity. EI, events जितने मर्जी आप define कर दें exactly. This would be equal to summation I is equal to 1 to infinity. Oops. Probability of EI. So what this expression is saying, that if you have multiple events in a sample space, you have event E1,
you have event E2, and you have event E3. So what this guy is saying, and I have specifically drawn E1, E2, and E3 such that they are mutually exclusive, which cannot occur simultaneously. So that means E1, E2, E3 इनको मुझे अलग-अलग draw करना पड़ेगा. E1 की अपनी कुछ outcomes होंगी जो E1 को support करेंगी, कुछ outcomes E2 को support करेंगी, कुछ outcomes E3 को support करेंगी. Okay, and the probability of the union of these events is the sum of the individual probabilities. Now, the probability of an event E1, tells us what proportion of the outcomes are contained in E1, what proportion of the total outcomes, कुछ ही outcomes बाहर भी हैं जो ना E1 में होंगी, ना E2 में होंगी, ना E3 में होंगी. So this tells us that proportion of outcomes contained in E1 in the case of equally likely outcomes. Okay. So proportion of outcomes contained in E1 for equally likely outcomes. So what this expression is saying that in सबके union की जो probability है वो sum of the individual probabilities, and this makes sense कि जितनी proportion इधर से आई है plus जितनी proportion इधर से आई है plus जितनी proportion इधर से आई है. This is only true when E1, E2, E3 are exclusive, mutually exclusive. Okay. Usman, you have a question? Please go ahead and ask. Sir, in De Morgan law, wouldn't there be a complement of individuals on the right side of a equation? Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Thank you very much. Sir, could you please repeat the last point, probability of E1, where you've mentioned? So probability of E1 क्या होती है? Probability of E1 is the number of points contained in E1 divided by the total number of points. Okay. So probability of E1 जो होती है is the number of points contained in E1 divided by total number of points in sample space. This is only for equally likely outcomes. All the outcomes are equally likely, which is not always the case, but it is mostly the case. So, for example, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक डाइस आपने रोल किया और जो डाइस आपने रोल किया उसकी आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6. I define a set event E. ये event E है. If I ask you what is the probability of E would be equal to number of points in E, which is how many? 1 plus 1, 2. 2 points in E divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, 1 by 3. So the probability that you will get either a 1 or a 4, that would be 1 over 3. That makes sense? Answers your question? Yes, sir. Thank you. Now, how did we come with this expression? Probability of E is number of points contained in E divided by total number of points in the sample space. The answer is very simple. We use the axioms of probability. Axiom क्या कहते हैं? Axiom ये कहते हैं कि for mutually exclusive events, उनका जो union है उसकी probability is the sum of the individual probabilities. So मैं वो जो third axiom है उस third axiom को मैं यहाँ पे apply करता हूँ. So I am going to apply the third axiom here. So one is an event. I know this is an outcome, but I can define an event to be an outcome. So ये एक और event है. ये मैंने दो events जो है यहाँ पे define कर दिए. So this event, let's say, is A, and this event, let's say, is B. What is the probability of A? Probability of A is the probability of that outcome occurring. It's 1 out of 6.
and similarly probability of B is also 1 out of 6. तो हमारा जो axiom 3 था वो ये कहता है कि the probability of A union B and C A union B is the same as E. Why? Because A और B जो है साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को अब नाउ ऐड कर सकता हूँ 1/6 + 1/6 which is equal to 1/3. तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं. So I'm going to just write some statements here, and many of those would make direct sense to you. One is the probability of E complement is equal to 1 minus probability of E. You can prove this by using the axioms. I'm not going to go to the proof. Left as an exercise, या शायद आपने अर्ली कोर्स के अंदर देखा होगा. very easy to prove. Axiom 2 और 3 को यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं. Can prove using axioms. और ये जो हमने नोट्स दिए हैं इसके अंदर शायद इसमें प्रूफ भी किया हो. एक और चीज, this should probably go down here. So if E is a subset of F, how do I show this? I show this on the diagram by showing this as F and E is the subset of F. E is fully contained in F. So when E occurs, we know that F will definitely occur. When E occurs, इसका मतलब है कि E के अंदर वाली कोई आउटकम आई है और वो आउटकम जो है वो F के बाहर नहीं है. आउटकम F के बाहर नहीं है. When E occurs, F is guaranteed to occur. But when F occurs, maybe E will occur and maybe E will not occur, depending upon the outcome which occurs is outside E and inside F or inside E. Okay. So E is fully contained in F. If E is a subset of F, then probability of E or probability of F, इनके दरमियान क्या relationship होगा? Probability of E and probability of F, what would be the relationship between the two? Any sensible guess? No, should be pretty simple. Probability of E would be less. Just than type, equal. just type. There is no need to say it. Just type in the chat window. So if E is a subset of F, this would be less than or equal to. This would be less than or equal to. And we can prove this also by using the axioms and this result above. Again, the proof is in the notes. I'm not going to go over that. Now, axiom 3 क्या कहता था हमने? Let's go back to axiom 3. Axiom 3 was saying that if events are mutually exclusive, then the probability of their union is equal to the sum of their probabilities. The probability of their union is equal to the sum of their probabilities. Now, what if events are not mutually exclusive? What if events are not mutually exclusive? If events are not mutually exclusive, if E and F are events not necessarily mutually exclusive, not necessarily mutually exclusive, then can we say something about probability of E union F? We know that by using axiom 3, if E and F are mutually exclusive, then it would be probability of E plus probability of F. लेकिन अगर वो mutually exclusive ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि this is your sample space, this is the event E, there is a possibility there is a possibility that F and E are not mutually exclusive. They are overlapping. When they are overlapping, and if I do this, if I write this as probability of E plus probability of F. So what I have done here is, ये भी correct नहीं है, ये भी correct नहीं है. What I have done here is
कि मैंने E के अंदर जितने पॉइंट्स थे, E के अंदर जितने पॉइंट्स थे उन सबको ऐड कर दिया, these blue points, और F के अंदर जितने पॉइंट्स थे, these red points, उनको भी मैंने जमा कर दिया, ठीक है। Now, what is wrong with this expression? What is wrong with this expression? Answers in the chat window. What is wrong with this expression? So we are double counting here. We are double counting here. We are double counting this area between E and F. इसमें probability of E और probability of F. एक दफा मैंने इसको ऐड किया और फिर दूसरी दफा मैंने इसको ऐड किया. You can see that there is an area. There is this area which is double counted, and that area is precisely equal to E intersection F. So I need to subtract that area, E intersection F. And by the way, this can also be proved, and the proof is given in the notes. Just take a look at that. This can also be proved by using these results above and the axioms of probability. So now this is an expression for two events. इसी तरह हम तीन के लिए भी कर सकते हैं. Probability of A union B union C. This would be equal to, if they were mutually exclusive, then this would be equal to probability of A plus probability of B plus probability of C, if they were mutually exclusive. But if they are not mutually exclusive, I need to do some correction. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे correction की है. So E intersection F को हमने एक दफा subtract किया है क्योंकि उसे double count किया हुआ था. So when I have A, B, and C together, this is A, this is B, and this is C. So A, B, and C together. What do I need to do? A, B, and C. Again, हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी double counting हो रही है. So क्या चीज हम subtract करते हैं? So हम subtract करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से let's subtract ये A intersection B को subtract करते हैं, ठीक है. और भी कोई चीज double count हो रही है, and that thing which is double counted is this guy. इसको भी subtract करते हैं. और किस चीज को subtract करना है? और हम subtract करते हैं, let's subtract this guy. So I'm going to subtract probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A. सारे दो के पेयर्स जितने बनते थे, सारे दो के जो पेयर्स बनते थे उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. और ये कितने पेयर्स बनते थे दो के कितने पेयर्स बनते थे? Well, how many pairs of two guys out of the three guys? That would be 3 choose 2. So the number of these guys here, ये कितनी टर्म्स होनी चाहिए? ये 3 choose 2 टर्म्स होनी चाहिए. कैसे पता हमें 3 choose 2 टर्म्स होने चाहिए? Because you have 3 guys A, B, and C, and I have to pick 2 out of those 3. How many ways we can pick 2 guys out of 3 guys? The number of ways you can pick 2 guys out of 3 guys is 3. Choose 2. 3 choose 2. 3 choose 2 terms. लेकिन एक मसला हो गया अभी. There is a problem with this expression. मैंने वो जो डबल काउंटिंग हो रही थी उसको सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, बट कोई गड़बड़ हो गई. What is that गड़बड़? Answers in the chat window. So इसमें ये जो दरमियान वाला ये तीनों के इंटरसेक्शन का जो एरिया था, ये हमने 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया. पहले 3 बार ऐड हुआ था, अब 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो बिल्कुल निकल गया. तो लेट मी पुट दैट बैक इन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको वापस पुट कर गया, एंड वी आर डन. ठीक है. सो समबडी कैन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर 4 ऑफ दीज गाइस. जनरलाइज करते हैं उसको, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, I'm just going to generalize for this guy. Probability of union I is equal to 1 to n EI.
तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक एक को लेना है, सबसे पहले एक एक को लेना है. सो समेशन I is equal to 1 to n probability of EI. सबसे पहले एक एक को लेना है, डबल काउंटिंग हुई तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेट्स पुट these terms here. So 2 at a time सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 at a time सब्ट्रैक्ट करें इसको, माइनस I1 less than I2 probability of EI1 EI2. This takes care of subtracting all the pairs of events, all the pairs of events. और ये कितनी terms होंगी, how many terms, ये जो मैंने रेड में लिखा है, how many terms are there, how many terms are there, ये जो मैंने रेड में लिखा है समेशन के अंदर कितनी terms होंगी. सबसे पहले ये बताएं कि ये ब्लू वाली कितनी terms होंगी, how many terms are there, ब्लू में टोटल n टर्म हमें नजर आ रही हैं, I is equal to 1 to n है, so total n terms. So basically ये n choose 1 terms है, n choose 1 terms. How many terms here, कि मेरे पास n events थे और n में से मैंने 2 पिक किए, so n choose 2 terms, n choose 2 terms. ठीक है, और ये हमने जब सब्ट्रैक्ट किया इनको, हमने कुछ और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हम वापस ऐड बैक करते हैं. लेकिन अब सिर्फ एक दफा 3 को ऐड नहीं करेंगे, अब हम ऐड करेंगे I1 less than I2 less than I3, 3 का जो है EI1 EI2 EI3, 3 वाला जो है उसको वापस ऐड बैक करेंगे. How many terms here, how many terms here, how many terms here, answers in the chat window. This would be, we have picked 3 guys out of n guys, so n choose 3 terms. ठीक है, जब आप ये वापस ऐड बैक करेंगे तो फिर कोई थोड़ी सी ओवर काउंटिंग हो जाएगी, फिर उसमें से 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. I1 less than I2 less than I3 less than I4 probability of EI1 EI2 EI3 EI4. How many terms here? There would be n choose 4 terms. ठीक है, और फिर उसके बाद 5 को ऐड बैक करना पड़ेगा, 6 को सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा एंड तक. सर यस, अभी जो आपने ऊपर वाली एग्जांपल की है एबीसी वाली, इसमें जो सेंटर वाला एरिया है इसको हम 3 दफा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो हमने 2 दफा ऐड नहीं करना पड़ेगा. 3 दफा सब्ट्रैक्ट किया था तो एक ही दफा ऐड करना पड़ेगा, उसको एक ही दफा काउंट करना है. तो 3 दफा हमने जब सब्ट्रैक्ट किया था तो 2 दफा ऐड करना पड़ेगा ना. 2 दफा क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हमने काउंट तो 1 दफा करना है. हाँ, तो हमने पहले 3 दफा ऐड किया था, फिर 3 दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया. पहले ये 3 दफा जो है वो ऐड हो गया, और फिर उसके बाद ये पहले 3 दफा ऐड हो गया, फिर उसके बाद फिर 3 दफा सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर 1 दफा वापस ऐड कर दिया. ठीक है सर, आगे से. ठीक है सर, जी. ये n3 टर्म्स वाला जरा दोबारा से करवा दें, और n4 ये समझ आया. समर, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है, so maybe you need to adjust the microphone a little bit. सर आवाज आ रही? जी जी, अभी बेहतर है. हाँ सर, ये n3 और n4 से जो कंटिन्यू आगे चेन हुई है, ये नहीं समझ आई, जरा बता दें. क्या चीज नहीं समझ आई है? सॉरी सर, आफ्टर n choose 2 के बाद जो हमने so this is not a proof, this is not a proof. I'm just saying कि just by extension, जिस तरह 2 से हम 3 पे गए थे, जिस तरह 2 इवेंट्स की यूनियन से हम 3 इवेंट्स की यूनियन पे गए थे, इसी तरह 3 से 4 पे जा सकते हैं, 4 से 5 पे, और इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं, इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ n इवेंट्स वो क्या होगा कि सबसे पहले आपने समेशन लेनी है अकेले अकेले की, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने हैं 2 को, फिर ऐड बैक करने हैं 3 को, फिर सब्ट्रैक्ट करने हैं 4 को, फिर ऐड करने होंगे 5 को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ये इसीलिए मैंने ये डाल दिया. ठीक है, इज दैट द क्वेश्चन, और आर यू कंसर्न्ड अबाउट दीज नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने पिक की हैं?
सर नंबर ऑफ टर्म्स की हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऐसे किए हैं, क्यों है? क्योंकि ये मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि आपने दो दो के पेयर जब लेने हैं तो तीन में से आपने दो दो के पेयर लेने हैं, तो हाउ मेनी वेज यू कैन पिक? 3 चूज 2। यहाँ आपने n में से दो दो के पेयर लेने हैं, n में से दो दो के पेयर लेने हैं, n चूज वे ऑफ डूइंग दैट। n में से तीन तीन के पेयर लेने हैं तो n चूज 3 वेज ऑफ डूइंग दैट। n में से चार चार के पेयर लेने हैं, n चूज 4 वेज ऑफ डूइंग दैट। मेक सेंस नाउ? यस ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा, वन सो क्वेश्चन। यस, अच्छा, ये जो हमने जेनेरिक फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे, डिराइव इसको नहीं किया, ये मैंने डिराइव नहीं किया, ये बाय एक्सटेंशन मैंने राइट कर दिया है। इसकी बाय एक्सटेंशन हमने डेवलप किया है। इसको हम उस केस के लिए भी यूज कर सकते हैं जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, मतलब कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, सारे EIs म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये वाली टर्म्स जो हैं, जितनी भी टर्म्स हैं पहली के अलावा जो ब्लू में लिखी हुई है उसके अलावा बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। सारी इंटरसेक्शंस जो हैं वो जीरो हो जाएंगे। सो EI1 EI2 जीरो, EI1 I2 I3 जीरो, I1 I2 I3 I4 सब के सब जीरो। इनकी प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, this is probability of intersection, this is probability of intersection, and this will all be zero except for the first term here, except for the first term here, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और ये this is from axiom 3 जो हमें ये कहता है कि EIs अगर mutually exclusive हो तो आप उनका यूनियन अगर लेते हैं तो sum of the probabilities is the probability of the union। ठीक है? Okay, so I'm going to move to the sample space, some examples of the sample space with equally likely outcomes. So sample space with equally likely outcomes. Equally likely outcomes. Okay. So probability of each outcome. If there are n outcomes, then the probability of each outcome is going to be 1 over n. The probability of each outcome will be equal to 1 over n. By the way, there is a, not a rigorous proof, but a semi-rigorous proof इसका है कि हम ये शो कर सकते हैं कि if you toss a coin, then there are two outcomes. It would be hard to say that head is more likely than the tail. If both of those, if the coin is said to be fair, then both of those would have equal probability. It makes sense to say that tail and head will have equal probability when the coin is fair. And since there are only two outcomes, तो हमें axiom क्या कहते हैं? Axiom हमें कहता है probability of sample space 1 होनी चाहिए। Probability of sample space 1 होनी चाहिए. That is only possible when you assign 1/2 probability to each of those two outcomes. तो इसलिए head की probability और tail की probability जो है वो दोनों 1/2 आ जाएंगे. Similarly, if you roll a dice which has 6 possible outcomes, the probability for each of these outcomes will be 1 out of 6, such that the probability of the sample space, according to our axiom, would turn out to be equal to 1. ये नोट्स में एक इसका सेमी रिगरस छोटा सा बिल्कुल प्रूफ है एक लाइन का, वो दिया हुआ है, उसको काइंडली देख लीजिएगा. So I am referring a lot of things to the notes. I am expecting that you would spend some time going through the notes, and these notes, most of those, not all of these, but most of these have been developed for a first course in probability. ये मैंने कभी पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में. So ये उससे डेवलप हुए हैं. So I am not going to go into the details of, वरना तो वो पूरे सेमेस्टर वाला कोर्स था. We can't repeat that course here. But आपके रेफरेंस के लिए all of those examples they are available in the notes. कुछ जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा थी वो मैंने बीच में से निकाल दी हैं, काट दी. Now, so probability of each outcome is going to be 1 over n. If you have an event
which consists of some of these outcomes. So let's say you have these outcomes. And these are all equally likely. You define an event E. Which includes some of these outcomes. So 4 of these outcomes support event E. Support event E का मतलब ये कि उन चारों में से कोई सी भी outcome occur करेगी तो E occur करेगा. They are favorable to E. Okay. So the probability of E in this case, according to our axiom, would be equal to, you can think of E as union of this guy, and this guy. इन 4 जो ये outcomes हैं, ये इनका मैं एक अलग छोटा सा सेट बनाता हूँ जिसमें एक ही outcome आती है, and apply the axiom here. Third axiom यहाँ पे apply कर देते हैं. So the probability of union of these 4 guys, which is event E, is probability of outcome 1, 2, 3, 4. If this would be equal to the sum of their probabilities. Okay, is equal to the sum of the probability of these 4 outcomes. But the probability of each of the outcomes, is 1 over n. So this is really equal to number of points in E divided by number of points in S. This only applies when you have equally likely outcomes. If the outcomes are not equally likely, you will have to do something else. Yeah, उसको wait करना पड़ेगा. You will have to wait. So one example. The example of equally likely outcomes, ये हमने पहले भी देखी है. Toss 2 coins. You can have how many outcomes in the sample space? Answers in the chat window. Toss 2 coins, outcomes in the sample space. Number of outcomes in the sample space. 4. There are 4 outcomes. Okay. So number of sample points or number of outcomes, एक ही बात है, outcome और sample points एक ही चीज है, is equal to 4. So probability of both heads, how many outcomes support this event of both heads? How many outcomes support this event of both heads? One outcome out of these 4 supports this event. इस event को एक ही outcome support करती है. So this is equal to 1 over 4. Okay. And the probability of at least one head. Okay. To answer this question, how many outcomes support this at least one head? So for that, I'm going to list the 4 outcomes here, and this would be HH, HT, TH, and TT. How many outcomes out of these 4 support this event that you get at least one head? एक outcome, 2 outcome, 3 outcome. इन तीनों के अंदर आप देख लें कि at least one head है. ठीक है, इसमें नहीं है. ठीक है. So how many outcomes, number of points in this event E, is 3. Number of points in the sample space is 4. So 3 out of 4 is the probability. That makes sense? So very simple to compute these probabilities. Very simple. Okay. Now I'm going to come back to this example now. इस example पे आते हैं जो बड़ी देर से हम इसको नीचे shift कर रहे हैं. So this is an example of rolling 2 dice together. Rolling 2 dice together. Dice की वैसे plural जो है वो die होती है, लेकिन we will just use the term dice. Dice ही use करेंगे. Okay, so first roll and the second roll. There are 6 possible outcomes on the first one and 6 on the second one. Together there will be 36 possible outcomes. Okay. Are all of these outcomes equally likely? Yes or no?
all of these outcomes equally likely? Yes or no? Answers in the chat window. So a few people have said yes. बाकी लोगों को पता नहीं. Yes. Okay, great. Okay, thank you. What is the probability of each outcome? Probability of each outcome. Answers in the chat window. 36 possible outcomes. Probability of each outcome is going to 1 over n, 1 over 36. Okay. What is the probability that the sum of faces is 7? Sum of faces is 7. Before you answer that, think about this. If sum of faces is 7, this is an event. How many outcomes from the sample space support this event? How many outcomes in the sample space? But how many number of points in this event? कितने हैं जो इसके अंदर है? So देख लेते हैं. ठीक है. So one is this guy, 6 और 1 आ जाए. ठीक है. फिर 1 is this guy, 2 और 5 आ जाए. फिर ये और फिर ये. ठीक है. Everyone agrees that we have these 6 points. These 6 points will give you this event that sum of faces is 7. So how many points in this event? The points in this event is 6. How many total points? Out of 36. 6 out of 36, and we are done. This is 1 by 6. So I'm going to erase these guys. Tick, 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 because I'm going to ask one more question here. In fact, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं. Copy and paste. Oops. Okay, now I'm going to ask a few more questions about this. Okay. One is, what is the probability that sum of rows is even? Sum of rows is even. Before you answer that, realize that sum of rows is even is an event. Find out how many points in that event. And then answer this question. Sum of rows is even. So एक ये वाला point हो गया. फिर ये sum यहाँ पे 3 है, नहीं इसको छोड़ देंगे. फिर ये हो गया, फिर ये point हो गया, and then ये point हो गया, ये point, and so on and so forth. You can complete this. And we see that this will be 18 out of 36. I'm not marking all of those. ये मैं सारे mark नहीं कर रहा और ये मैं वापस erase भी कर रहा. So you get the idea. What is the probability that sum of rows is odd? Answers in the chat window. This would also be 18 out of 36. 36. Are these two events, this guy here and this guy here, these two events, are these two events mutually exclusive? Yes or no? Answer in the chat window. Mutually exclusive. Yes or no? Yes, they are mutually exclusive. एक अकर करे तो दूसरा नहीं हो सकता, या even होगा या odd होगा, दोनों simultaneously नहीं हो सकते. Are they collectively exhaustive? Are they collectively exhaustive? Answers in the chat window. And the answer is yes. Why? Because या odd आएगा या even आएगा. There is no other possibility. Third possibility ही कोई नहीं. Now, a couple of more questions about the same example. Okay. So what is the probability that first roll or the number on the first dice is equal to the second roll? First roll is equal to the second roll. Answers in the chat window. कैसे?
ये वाले जो आपके पास पॉइंट्स हैं, these points here, ये जो मैंने एक सेट बना दिया, these points, how many points are those? These are the points which indicate that the number on the first row is the same as the number on the second row. So first row is equal to second row. This event occurs when any one of these six guys occur. Okay? So this is 6 out of 36. What is the probability that first row is greater than the second row? Is greater than the second row. So I'm going to erase this for a little bit and then ask this question. What is the probability that the first row is greater than the second row? Try to find out where are those points. Where are those points? First row is larger than the second row. So think about it. If first row is larger than the second row, अगर सेकंड रोल पे 1 आता है तो ये सारे पॉइंट्स इसमें, सेकंड रोल पे अगर 2 आता है तो फिर ये सारे पॉइंट्स इसमें है। तो ये बेसिकली ये जो लोअर ट्रायंगल बन गई है, ये सारे के सारे आपके इवेंट है, ये सारे के सारे आपके इवेंट है। आई एम गोइंग टू क्लीन इट अप अ लिटिल बिट। And now you can go ahead and count the number of points in here. Count the number of points in here. So this would be equal to 15 over 36. इनको count कर लें, 15 आएंगे आपके। What is the probability that second row is greater than the first row? Now you can again count the points और वो ये upper triangle में आएंगे, ठीक है? But count करने की जरूरत नहीं है, क्यों? Because both the dice are the same. एक ही जैसी dice हैं. There it would be unfair to say कि first roll greater than second roll की कुछ और probability है, second roll greater than first roll की कुछ और probability है. It should be exactly the same. Should be exactly the same. By symmetry. By symmetry. Count करना चाहें कर सकते हैं. ये तो हमने count ही किया था. By counting, but you don't need to count again. Don't need to count again, and then you are done. So are these three events mutually exclusive? Yes or no? Answers in the chat window. They are mutually exclusive. Why? Because या बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा, या दूसरा बड़ा होगा. It is not possible for all three of them, or any or two of them, to occur simultaneously. Are they collectively exhaustive? Yes, they are collectively exhaustive because सबकी probability को add कर दें तो आपके पास 1 आ जाएगा. जी Usama. Add a general question, like for checking mutual exclusivity, is it a proper way to add up their probabilities and check if they sum up to 1? Does that always work? That works for collectively exhaustive. I think you meant collectively exhaustive, right? Yeah, but even like if they're not mutually exclusive, their probability should not add up to 1. It should be greater than 1 then. It will not be greater than 1. It will not be greater than 1. If the probability of their union, जब आप union लेंगे तो फिर उसमें से common area आपको subtract करना पड़ जाएगा. 1 से बड़ा कभी नहीं आंसर आएगा. या अगर लेकिन वो mutually exclusive नहीं है, फिर उनकी probability का sum 1 से ज्यादा हो जाएगा. वो पता नहीं क्या चीज निकलेगी. That makes no. हाँ. So for example, what you are saying is कि there is an event E here, ये इतना बड़ा है, and there is another event F here. दोनों की probabilities को add करें तो आपके पास 1 से ज्यादा आ जाएगा. But I don't know what that number would mean. ये आपके पास event E है, ये event F है, ये आपकी sample space है. E की probability जो है वो 0.8 है, F की probability 0.9 है. 0.9, 0.8 add करें 1.7 आ जाएगी, right? Yes sir, मैं वही कह रहा था कि जिससे हमने ये last part में when you asked कि mutually exclusive हैं कि नहीं, what I did was that I added up the probabilities and I saw them collectively. No. Do not confuse mutually exclusivity with collective exhaustive. Collectively exhaustive का मतलब है कि उनके union जो है उसकी probability आपको sample space की probability के equal मिल जाएगी, 1 हो जाएगी.
the probability of the union would be equal to 1. Probability of the union, not the sum of the probabilities. And the probability of the union equals to the sum of the probability only when they are mutually exclusive. Otherwise probability of the union उसमें से हमें subtract भी करनी पड़ती है कुछ terms, ठीक है, वो अभी हमने ऊपर पूरी थ्योरी की है यार उसकी, ठीक है। Now mutually exclusive को टेस्ट करने के लिए मैं उनकी probabilities कभी ऐड नहीं करता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टेस्ट करने के लिए मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड नहीं करता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे टेस्ट करेंगे? आंसर इन द चैट विंडो। एनी आइडियाज? हाउ डू यू चेक two events are mutually exclusive or not? How do you check? Their intersection will be empty. Thank you on. Not sum is one. Sum is one is not the right answer. दो events कैसे mutually exclusive होंगे? ये देखें, एक ये इवेंट है और ये इवेंट है, और यहाँ पे आपके सैंपल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सैंपल पॉइंट हैं जो इनके बाहर हैं। इन दोनों की सम प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे 1 नहीं आएगी, बट दे आर स्टिल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, now last question that I'm going to ask about this is, what is the probability? Excuse me sir. Yes सर, लेकिन अगर हमारे पास हमें ये ना बताया जाए कि हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं और हमें सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम दे दी हुई, 3 इवेंट्स की आउटकम दे दी हुई कि ये प्रोबेबिलिटी है। इवेंट्स की आउटकम नहीं होती, कुछ इवेंट्स की आउटकम नहीं होती, इवेंट्स जो है वो खुद सेट। माय बैड, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें मेंशन कर दी हुई है जी, जिस हमने 6/36, 15/36, 15/36। अब हमें सिर्फ यही स्कोप है हमारे पास। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं हैं। हाउ वुड वी डू इट? सो आपको 3 प्रोबेबिलिटीज दी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, मेक सेंस? इसको करके देखें। Are A, B and C collectively exhaustive? Are A, B and C collectively exhaustive? 4 आंसर आए हैं यस के। मुस्तन सर ने कहा है नो। Anyone else? ये 3 इवेंट्स हैं A, B, C, जिनकी प्रोबेबिलिटीज दी हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी चालाकी से दी है ये कि इन तीनों का सम 1 आ जाता है। But really, I don't know whether A, B, C are mutually exclusive or not. Undetermined. Thank you, Sharia. उसामा ने सवाल पूछा कि were they mutually exclusive? I don't know whether they were mutually exclusive or not. Unless you know that they are mutually exclusive, I cannot tell you कि they are mutually collectively exhaustive or not. अगर मैं आपको बता दूं कि A, B, C mutually exclusive हैं, given that information, are they collectively exhaustive? Then the answer would be yes. ठीक है, तो ये नहीं बता सकते। यहां पर तो मुझे इवेंट्स का भी पता था ना। अगर कह रहे हैं कि अगर इवेंट्स भी आपको ना बताएं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी उनकी दे दी जाए, तो उस खाली प्रोबेबिलिटी से जो है ना हम वही बता सकते हैं जो हम बता सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने इवेंट्स को भी देखा है और कहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये तीनों इवेंट्स मुझे पता है इनमें से 3 में से एक ही एक टाइम पे अकर कर सकता है, या इक्वल होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। ये मुझे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इवेंट्स इनहेरेंटली मिल गई थी। यहाँ ए बी सी से मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मैं नहीं बता सकता कि और बी ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। मैं ये भी नहीं बता सकता कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है या नहीं। ये 0.3 की जगह मैं ये 0.8 भी कर देता अगर यहाँ पे, मैं फिर भी नहीं बता सकता था कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है या नहीं। इट इज एंटायरली पॉसिबल कि यहाँ पे एक ये C होता जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 होती, उसी के अंदर B होता और उसी के अंदर A होता। ये कंप्लीटली पॉसिबल था। तो A, B और C ये कभी भी म्यूचुअली कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं होते। ये बस इनकी प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 ही आ जाती है आपके पास। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन नाउ। लेकिन अगर
हमें ये गिवन हो कि इन तीनों का सम 1 है, फिर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ना नहीं, कैसे होंगे सर, क्योंकि फिर इंटरसेक्शन हमारे पास 0 आ जाएगा अगर 0.2 यार? प्लस तीनों का सम 1 होने से इंटरसेक्शन 0 कैसे आएगा? सर हमारे पास टोटल 3 इवेंट्स हैं और तीनों का सम 1 है और 0.2, 0.3 और 0.5 इनके इंटरसेक्शन 0 के अलावा और कोई वैल्यू हो नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? अगर होगी तो हमें फिर माइनस करना पड़ेगा और यार कैसी माइनस बात? करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, ये आपके पास इवेंट बी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दी हुई है आपको? 0.5। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और ये वाला इवेंट जो है, ये मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये वाला ए है और ये बाकी जो है ये सी है। ठीक है, ये वाला जो शेडेड एरिया है ये सी है। ठीक है, ये कहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कैसे पता चल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं पता चल रहा। नहीं सर, अगर हमें ये बता दिया जाए कि सिर्फ यही 3 इवेंट्स हैं और इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, फिर तो म्यूचुअल व्हाट डू यू मीन बाय यही 3 इवेंट्स हैं? यानी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तब तो म्यूचुअल 1 आ रही है, 1 आ रही है, ये बता दिया आपको। इन तीनों को ऐड किया है तो 1 आ रही है। नहीं। यहाँ अगर पे हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो 1 आ रही है। बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, सी की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और ए की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। बी के अंदर सबसेट्स हैं ए और सी। लेकिन सर इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो 0.5 है ना सर। जी 0.5 है फिर। जी जी, लेकिन अगर हमें ये गिवन हो कि तीनों इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 है, फिर तो हम कह सकते हैं ना कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि इन तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 है और यही वैल्यूज दी गई हो, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है। Anyway, so I am going to ask this last question about this example. Probability at least one roll is a 6. At least one roll is a 6, and I'm going to show this picture to you. At least one roll is a 6. What is the answer? What is the probability? What is the probability at least one roll is a 6? Okay? काउंट करते हैं कि कौन कौन सी हैं आपकी। ये पूरी 6 वाली लाइन है, ये पूरी 6 वाली लाइन है और ये पूरी 6 वाली लाइन है। ठीक है, डबल काउंट नहीं करना है। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So this is 11 out of 36. 11 out of 36. काउंट कर लें इसको, 11 out of 36. Okay. So couple of more examples. So एक example हमारे पास है कि you have a box which has 6 white balls and 5 black balls. 6 white and 5 black balls. Okay. Draw two balls without replacement. यानी पहले एक निकाल ली और फिर उसके बाद दूसरी निकाल ली, या दो इकट्ठी निकाल ली। एक ही बात है, दो इकट्ठी निकाल लें या एक निकालें और फिर विदाउट पुटिंग इट बैक गेट द सेकंड वन एज वेल। ये दोनों एक ही बात है। What is the probability? One white and one black. What is the probability? One white and one black. Okay. So I'm going to figure out what is the number of points in the sample space and what is the number of points in this event. Okay. So number of points in sample space, ये कितने होंगे, और number of points in this event, जिसको चलें E कह देते हैं, one white and one black, इसको event E कह देते हैं. So number of points in event E,
नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट ई ये कितने हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज कि 11 में से आपने 2 बॉल्स चूज की. 11 में से 2 बॉल्स चूज की. Are we considering all the white balls to be different or the same? Answers in the chat window. Are we considering all the white balls to be different or the same? Is counting के अंदर all the white balls to be different or same? जिन 6 लोगों ने सेम कहा है वो दोबारा से सोचें अगर रीथिंक करना चाहते हैं. I will give you an extreme example. Extreme example ये है कि एक आपके पास ये बॉक्स है जिसके अंदर 15 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है, और आपने 3 व्हाइट बॉल्स पिक करनी है. तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें से 3 पिक करनी है तो 15 choose 3 ways you can pick the white balls. Are you considering white balls to be different or the same? Different. 15 choose 3 तभी हम कर सकते हैं जब ये व्हाइट बॉल सारी डिफरेंट हो. अगर सारी व्हाइट बॉल सेम होती तो there is only one way of picking those 3 balls out of those 15. There is only one way of doing that. क्योंकि अगर वो सारी एक जैसी हैं तो बस 15 में से 3 उठा लें, क्या फर्क पड़ता है, वो तीनों ही व्हाइट हैं, वो तीनों ही व्हाइट होंगी. There cannot be 15 choose 3 ways of picking 3 white balls out of these 15 white balls if you consider all these white balls to be the same. मैं उनको वर्चुअली डिफरेंट समझ रहा हूँ, डिफरेंट समझ रहे हैं, इसीलिए जो है ये 11 choose 2, इसलिए 11 choose 2. So very important to understand that. Now number of points in the event E. Number of points in the event E कि आपके पास 6 white balls हैं, उसमें से एक चूज की, और 5 black balls हैं, उसमें से भी एक चूज की. Multiplied by 5 choose 1. Why multiplied? Because of the basic counting principle. So this is going to be 55, this is going to be 30, और ये आपके पास आंसर है. एक इसका अल्टरनेट तरीका भी है देखने का. अल्टरनेट तरीका जो है जिसमें आप सारी व्हाइट बॉल्स को एक जैसा कंसीडर करते हैं, नॉट डिफरेंट. सो अल्टरनेट वे जो है, अल्टरनेट वे इसका ये है कि पहले व्हाइट निकाल लेते हैं और फिर ब्लैक निकाल लेते हैं. So what is the probability you will get a white first? It's 6 out of 11. Now you are considering all the white balls to be the same. So 6 out of 11. और उसके बाद जब आपने पहली व्हाइट निकाल ली है, अभी रिप्लेस नहीं किया, अब 10 बॉल्स रह गई हैं, ठीक है. Then you have 5 black and 5 white balls left. So 5 out of 10 would be the probability for getting a black. So first white, then black, plus the probability that first black, then white. First black, then white, which is 5 out of 11 into 6 out of 10. वो भी यही आंसर आएगा जो ये 30 over 55 आ गया. 30 over 55. Same answer. Why did I add these together? I added these together because of the third axiom of probability. Which says कि 2 events हों आपके पास जो mutually exclusive हों, तो उनके यूनियन की probability उनके सम probabilities के सम के बराबर. So this guy, first white then black, is mutually exclusive from first black and then white. ऐसा हो नहीं सकता कि ये दोनों इवेंट साथ साथ हो गए. First white then black is one event. First black then white is another event. These two events are mutually exclusive. अगर first white आ गई और फिर black आ गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर first black और दूसरी white भी जो है वो same ही event है. Same event नहीं है, it's a different event. या ये अकर करेगा या ये अकर करेगा, इसलिए हम उनकी probabilities को ऐड कर सकते हैं. And these are the only ones that we are interested in, because these are the only ones which give you one white and one black ball. See?
So couple of other examples ये notes के अंदर दी हुई हैं. Please make sure you go through those. In fact, there's one very quick one that I can talk about right now. Is yes, you have a question? सर ये तो हमारे आंसर दोनों में सेम आया, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम बॉल्स को डिफरेंट कंसीडर करें या एक ही कंसीडर करें तो आंसर सेम आएगा. आंसर सेम नहीं आएगा. दो मेथड्स हैं ये सॉल्व करने के. पहला मेथड जो हमने ये यूज किया है, इसमें हमने बॉल्स को सबको डिफरेंट कंसीडर किया है. जो दूसरा मेथड यूज किया है, ये इसमें बॉल्स एक जैसी कंसीडर की है. राइट? यानी कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा. सेम ही आंसर आएगा ना, ऑफ कोर्स. व्हाइट बॉल जो है वो व्हाइट बॉल ही है. अगर उसको मैं लेबल अगर कर भी दूं, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिख भी दूं, तो the question is not interested in कि जो व्हाइट बॉल आपने पिक की है उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है. वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो व्हाइट बॉल है या नहीं है और एक ब्लैक बॉल है या नहीं है. Does that make sense? Yes, sir. Thank you. ठीक है. Okay. Now, so this example is about birthdays. ठीक है. So let's say you have two people in the room. Two people in the room. Answers in the chat window that they both have the same birthday. Answers in the chat window. They both have the same birthday. दोनों की बर्थडे एक जैसी है. क्या चांस है इसका? So multiple ways of answering this question. सबसे पहले तो आप देखें कि number of points in E divided by number of points in S. So probability that they both have same birthday. So what is the number of points in S? Number of points in S is 365 by 365. Out of which, how many number of points in E? Number of points in E कितनी? Number of points in E. Answers in the chat window. Number of points in E, where E is the event that both of them have the same birthday. What is the number of points in E? The number of points in E is कि दोनों 1st जनवरी को हो, या दोनों 2nd जनवरी को हो, या दोनों 3rd जनवरी को. So there are 365 different possibilities. 365 different possibilities. So you get your answer. What would be the answer? Not 1 over 365 square. It would be equal to 1 over 365. 1 over 365. या ऐसा भी हो सकता है. Think about the first person. The first person can have the birthday on any of the day of the year. On any of the day of the year. What is the probability that the second guy will have the birthday on the same day जो पहले वाले की है? It's 1 out of 365. It's 1 out of 365. So ऐसे भी इसको देख सकते हैं. ये तो दो लोगों के लिए कि if you have n people, oh, before I ask for n people, let me ask it for 365 people. Actually, let me just change that. 370 people. 370 people. What is the probability that any two guys have the same birthday? What is the probability that any two guys have the same birthday?
you have 370 people in the room, what is the probability that any two guys will have the same birthday? Answers in the chat window. It's going to be one. It's going to be one. क्योंकि 370 लोग हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सबकी डिफरेंट बर्थडेज हो जाए. कोई से दो लोग आपको मिल ही जाएंगे, कोई से दो लोग मिल जाएंगे जिनकी बर्थडे एग्जैक्टली सेम होगी. सो द प्रोबेबिलिटी दैट any two guys will have the same birthday would be 1, and or in other words the probability that no two guys have the same birthday would be 0. No two guys have the same birthday, the probability of that event would be 0. But if you have n people, okay, then number of points in S would be equal to 365 into 365. कितनी दफा n terms होंगी, n terms, which is 365 power n. And number of points in E, where E is the event that no two guys have same birthday. E is the event that no two guys have the same birthday. So number of points in E is going to be, first guy can have the birthday on any of the day. Then the second guy can have the birthday on a different day, not on the, because no two guys have the same birthday, 364 into 363, and so on and so forth, up to whatever number, 365 minus n plus 1. So number of points in E divided by number of points in S. So it's surprising. If you have two people, everyone has given the answer कि ये 1 over 365 होगी. The probability that both have the same birthday is 1 over 365. The probability that they have different birthdays is going to be 1 minus 1 over 365, which is close to 1. Very likely कि दो लोगों को आप एक कमरे में डाल दें, very likely that they will have different birthdays. उसकी probability बहुत ज़्यादा है, close to 1 है. If you have 370 people, the probability that everyone will have a different birthday, the probability of that would be 0. Okay? If you have close to 300 people, then very likely that two guys will have the same birthday. Very likely that you will find two people who will have the same birthday. The probability that everyone will have a different birthday is going to be a small number. But the surprising thing is that only for n is equal to 23. Only for n is equal to 23. 23 छोटा सा नंबर, 23 लोगों को एक कमरे में डाल दें, the chances that at least two of them will have the same birthday, are more than 50%, are more than 0.5. ये इसी से कैलकुलेट हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ई और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस से ये कैलकुलेट हो जाएगा. So there are some questions. Then you need to decide how far back in years you wish to go back first before we can do probability. I'm not sure what this question is saying. What if we include the year of birth as well? Well, yes, the year of birth अगर include भी कर लें तो age के ऊपर भी depend करेगा. Moise का सवाल है, in this case it won't be mutually exclusive. I don't know which, when we talk about mutually exclusivity, then mutually exclusivity is always between events. यहाँ मुझे नहीं पता, एक से ज़्यादा event तो नहीं है, तो हम एक ही event की बात कर रहे हैं. So पता नहीं किसकी mutual exclusivity की बात हो रही है. If you want to ask the question, Moise, please go ahead and ask. ठीक हो गया सर, समझ आ गई. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर बर्थडे सेम होती हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा. लेकिन नहीं, ये सवाल गलत है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को अंडरस्टैंड करें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बर्थडेज नहीं होते. ठीक है सर, समझ गया. ठीक है जी. उसामा, going back to the balls example, white और black वाली, वहाँ पे आपने without replacement की बात की है जी. इसकी क्या implications आ रही हैं हमारी एक्सपेरिमेंट पे? इसकी implications ये हैं कि अगर हम रिप्लेस कर देते हैं बॉल को, अगर हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं
तो it really brings you back to the same situation कि आपके पास ये 11, the probability would be slightly different, ठीक है. So for example, ये alternate way में अगर देखते हैं कि मैं ये रेड में लिख देता हूँ कि अगर हम बॉल्स को वापस रिप्लेस कर देते हैं, the chance is that you get the first white ball and then a black ball would be 5 out of 11, ठीक है. ये 11 क्यों हो गया, 10 की जगह पे मैंने 11 क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने बॉल वापस रिप्लेस कर दिया, ठीक है. प्लस 5 आउट ऑफ 11 इनटू 6 आउट ऑफ 11. ओके ठीक है. सो ये स्लाइटली डिफरेंट आंसर. ठीक, थैंक यू सर. Okay, sure. Any other question before I close the session? By the way, these notes have already been uploaded. They are sitting on LMS. एक एग्जाम्पल है इसके अंदर जो at the end of the notes, बिल्कुल आखिरी जो एग्जाम्पल है, it's about hat matching problem है. So basically interesting सी प्रॉब्लम है कि n people हैं, वो अपने hat जो है वो डाल देते हैं, फिर बाद में randomly pick करते हैं, क्या चांस है कि किसी के पास अपना hat आ जाएगा. So interesting problem है. Just take a look at that. We will go over that in the next lecture. Next lecture के शुरू में करेंगे, and then in the next lecture we will talk about, maybe 1 or 2 more examples, and then we will jump to the conditional probability and independence. कोई question? मुस्तन सर, आपका question? जी सर. सर ये जो अल्टरनेट वाला अभी हमने मेथड किया है बॉल्स के रिलेटेड, इसको सर हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि जैसे हमने फर्स्ट वाइट एंड देन ब्लैक हमने पिक किया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि मकसद के 2 डिफरेंट वेज हैं ऑफ पिकिंग. इसी तरह जी आई थिंक कि एक वाइट और एक ब्लैक निकाल लें और पहली वाइट और दूसरी ब्लैक निकाल लें, फिर उसके बाद उनकी रीअरेंजमेंट कर दें, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें. यस, इन दिस पर्टिकुलर केस आप कर सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर केस इसका सर क्या मतलब है? इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाली एग्जांपल के लिए कर सकते हैं. ये अच्छा. इन जनरल सारी एग्जांपल्स के अंदर शायद एप्लीकेबल नहीं होगा. अच्छा, ठीक है ना. ठीक है. थैंक यू सर. जी, समर सर अमेंडेबल क्या? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो बिल्कुल नीचे आपने नंबर सैंपल स्पेस निकालने के लिए 365 मल्टीप्लाई बाय 365 किया, राइट? जी जी. ये 2 पीपल के लिए है, मतलब इसीलिए, क्योंकि सिर्फ 365 नहीं होना चाहिए. ये इसलिए है क्योंकि देखें, 2 डाइस अगर लेते हैं, एक डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक कुछ आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी 1 से 6 तक कुछ आ सकता है. वहां पे हमने जब कह दिया कि 36 सैंपल पॉइंट्स हैं, उस पे एतराज नहीं था ना हमें, राइट? 36 है ना टोटल सैंपल पॉइंट्स, ठीक है. नाउ इफ यू हैव n people, then if you have 2 people, पहला पर्सन जो है उसकी बर्थडे कब हो सकती है? 365 डिफरेंट डेज के ऊपर हो सकती है, दूसरे की भी 365 डिफरेंट डेज पे हो सकती है. सो इट वुड बी 365 मल्टीप्लाइड बाय 365. कुछ मैं आपको सैंपल पॉइंट्स देता हूं उसके, ठीक है, उसके सैंपल पॉइंट्स देते हैं आपको. सो सैंपल पॉइंट ये होगा कि पहला पर्सन जो है जनवरी 1 को पैदा हुआ है और दूसरा जो है वो मार्च 13 को, ठीक है. दैट्स 1 सैंपल पॉइंट. फिर दूसरा पर्सन फरवरी 7 को हुआ है और पहला पर्सन फरवरी 7 को और दूसरा पर्सन नवंबर 11. That's another sample point. So you can count these. इसको काउंट कर सकते हैं 365 by 365. पहले वाले के लिए भी 365 पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे के लिए भी 365 पॉसिबिलिटीज, राइट? So 365 by 365. Okay, that makes sense. जी उस्मान, please go ahead. सर व्हाट इफ अगर ये जो लीप ईयर हो, what if the year is leap, in that case it will have a 366 days. जी. Should we ignore it, that possibility? नहीं कर लें कंसीडर. आप 366 के साथ आंसर कर दें, वो भी सही है, वो भी सही है. हाँ, हमने तो ये एग्जांपल के तौर पे ले लिया, ठीक. जी उसामा.
Yes sir, छोटी सी inquiry थी. Have you finalized the quiz date? जी, I have finalized the quiz date. Monday. It would be either Sunday or Monday. वो अभी एक आखिरी जो है वो हम लोगों से पूछेंगे 6 p.m. Sunday or 9 p.m. Monday. One of these two. 6 p.m. Sunday or 9 p.m. Monday. अभी इन दोनों में finalize करना है. You still waiting for answers, or will you run another poll? People have been very unreasonable. Okay. People have been extremely unreasonable. I am disappointed to say that. हमने ईमेल के अंदर इतना क्लियरली लिखा था कि अगर आप बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं मेक कर सकते, फिर कोई कह रहा है कि जी बड़ा बिजी दिन होता है, रैंडम काम करने होते हैं और किसी को अपनी खाला से मिलने के लिए जाना है. Those are lame reasons and we can't expect, grown ups हैं, grown ups की तरह बिहेव ही नहीं किसी ने किया. तो सर जो लोग जल्दी सो जाते हैं उनके लिए तो 9 PM प्रॉब्लम नहीं होगी? जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी. And this would be a recurring event, right? 9. This would be a recurring event. अगर किसी को नहीं पसंद आएगी डेट तो वो ये कोर्स छोड़ दे. I don't mind that. All right, sir. ठीक है. 9 बजे अगर सोने से मसला हो रहा है आपको, तो किसी को वीकेंड से मसला हो रहा है, किसी को 9 बजे से मसला हो रहा है, तो think about it कि there are 125 people in the class. आप किंग नहीं है कि आपकी बात ही सब मान लें. Yes, sir. Thank you. जी, any other question? जैन साहब क्या कह रहे हैं, टॉस करना पड़ेगा. मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा. When you have unreasonable people, then you have to, or I will just impose it, जो whatever would be convenient for me. शायद पूछना ही नहीं चाहिए था. Anyway, so any other question about the course material? Okay, great. So I will stop it and will upload the video as soon as it is ready. Okay, thank you very much.